फ्रीलांसर हैं, पेमेंट नहीं हो रहा, काम टाइम पे नहीं आ रहा, तो सब उस मामले में ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि जितना पैसा लेते उसका आधा दूंगा। एंड तभी मैंने आपको बोला था कि महादेव। Thank you for the compliment. Yes, it will. I think it's completely different from that because I play Avinash Kamath in this series. Wowed everybody with your fitness levels. तो अब आपने बॉडी और फिटनेस की बात की है तो होगा, एक दिन जल्दी होगा। I'm genuinely saying, when you say yeah, मैं नीरज पांडे सर के साथ कुछ कर, नीरज पांडे सर के साथ कुछ, अरे यार क्या बात है। किसी और का अच्छा काम देखते हैं तो तारीफ भी होती है और मन में जलन भी होती है। ये यादगार रहेगा एपिसोड बिकॉज आप पे प्रेशर पड़ा था। अब लेट्स सी ये मैनिफेस्ट। ये आप बात अच्छा कर रही हैं, बार बार जो इनको याद दिला रही हैं। मतलब she is also not letting go. नहीं। और बताओ क्या हाल है। मेरा नाम है अनुपम खेर और आप देख रहे हैं और बताओ। मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं और बताओ। हाय, मैं हूँ मोहित रैना और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। स्तुति के साथ। हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति। वेलकम टू और बताओ। आज मैं टीम द फ्रीलांसर के साथ बैठी हूँ। बिफोर आई इंट्रोड्यूस माय लवली गेस्ट, आई हैव टू टेल यू, फ्रीलांसर शब्द जो है ना, कईयों की दुखती नब्ज है कि फ्रीलांसर हैं, पेमेंट नहीं हो रहा, काम टाइम पे नहीं आ रहा, तो सब उस मामले में ठीक है। Hopefully. Excellent. Lovely. So we of course have the showrunner, Neeraj Pandey here with us. Anupam Kher, Mohit Raina, welcome to Aur Batao. Thank you so much for having us. अब मैं आपसे पूछूंगी अनुपम जी कि नीरज पांडे खुद अपना चेहरा दिखा देते हैं और आप हाँ बोल देते हैं या स्क्रिप्ट की नौबत तक बात आती है? मेरा पहला एक्सपीरियंस जो था इनके साथ वेडनेसडे का था, वो क्लियर था। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया कि इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया था और मैंने वो रखा हुआ था। फिर मैं बोल रहा था और इन्होंने मुझे कहा कि जितना पैसा लेते उसका आधा दूंगा, बिकॉज हम अरेंज पैसे कर रहे हैं पैसे, तो बट आई वांट टू मेक दिस फिल्म। फिर मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था बाय, मतलब ऑब्वियसली इन फ्लाइट, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा हे भगवान, ये जहाज जल्दी उतर जाए, ये किसी और को न ले ले इस बीच में। उसके बाद फिर मैंने उतरते इनको फोन किया, उसके बाद कभी नहीं। उनके बाद इनका बस फोन आता है और मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ। बट अब वो फ्रीलांसर वाले अमाउंट वाली दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, अमाउंट वाली नहीं, तब भी दिक्कत नहीं थी। आई थिंक आई शुड हैव पेड हिम फॉर वेडनेसडे। It's a That's fact. a big compliment. No, it's a fact. It's a truth completely. I think he just needs to be there and tell. बल्कि मैं तो काम मांगता रहता हूँ इनसे। अभी इंटरव्यू से पहले भी बोलता रहता हूँ मैं उनको कि करो कुछ। But Freelancer has been a great experience because we worked together on few days and there was no time to think, and since I play the mentor to his character, one had to gather oneself constantly and it's always a joy to work with him. It's always a rich experience. I feel richer when I have finished working with him. How lovely. नीरज जी आपके साथ बैठ के आपके सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत uncomfortable. No, I think you should get used to this. No, now. Okay. but how do you deal with this? Because तारीफ सिर्फ वो नहीं करे, उन्होंने तो आपके साथ काम किया है, जो देखते हैं उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि नीरज पांडे यूनिवर्स में अब क्या होगा। No, we feel blessed and privileged. It's a good position to be in rather than not, right? So the amount of love that we get from the audiences, or it encourages you a lot to do the right thing. So we don't take it for granted. हम जानते हैं कि हमें और मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ेगी with every project that we undertake. And the same goes for this one. I mean, we had to give them a bigger experience. That was the whole agenda with the Freelancer, that we give them, our audiences, a bigger experience of what this world is, a more intense, a more thrilling experience, and here we are. Absolutely. Coming to you, Mohit, I remember the last time we spoke was on Zoom, and तभी मैंने आपको बोला था कि महादेव because आपने ऐसा एक imprint छोड़ा है playing Mahadev, and I know as an actor you obviously also you enjoy that, but you also want to move away from it and do characters कि लोग आपको बाकी किरदारों से भी याद रखें। यहाँ पे चाल चलन बिल्कुल अलग है। It is a little similar to what we saw of you in Uri. What would you tell us about your character? No, I think first of all, thank you for the compliment. Yes, I think it's completely different from that because I play Avinash Kamath in this series, who's a sub-inspector, assistant sub-inspector in Mumbai Police, and he has his own journey. I would say he's a ordinary person in extraordinary situation. You know, we all have that that side in us
which we don't really tap unless and until the time has completely gone upside down and you know the world has crashed down. हम हर किसी में I think we have that force to achieve anything in life, but unless and until there is the period is such, or we are like completely down and dusted, we don't tap that side, you know. So personally, since 10-15 years I started working, I haven't done anything like Avinash Kamath, because there's this character who has everything in his life, and but unfortunately due to certain circumstances, you know, he loses everything in his life, professionally as well and personally as well, and he's completely into a dark phase in life where he has lost all hopes. And then I meet Dr. Khan, which is Anupam Sir's character, who helps me to understand life differently and gives me a new perspective and reforms the character. And then he comes back from ashes, and then he goes to achieve whatever is there. And he starts working on a global platform with different agencies. He becomes a ruthless mercenary, I would say, you know. So I think all these elements in Avinash Kamath are very, very different, and I genuinely haven't done anything of this sort before, because it's a journey of a person from being zero to hero, you know, if I could sum it up. So I haven't done anything like that before. Lovely. Anupam ji, आपने 500 से ज़्यादा फिल्में की हैं. What is it that still keeps you going? How do you approach when you're on set? What does that at the back of your mind play कि अब तो हम veteran वाली category में आ गए हैं. There's really nothing that I can't do. Horizons, dreams, dissatisfaction, my own brilliance, trying to sort of say that there is a possibility. Unless you push yourself constantly, how can you be happy? I'm not happy. I'm a very restless person, and I want to be the best. 500 तो फिगर है, 530, 540 हो गया. मुझे लगा आप कब रेक्टिफाई करोगे. हाँ. मैंने राउंड ऑफ कर दिया था. मैं ये नंबर का भी मुझसे वुडी एलन साहब ने पूछा था एक बार कि आप ये नंबर कब से. मैंने कहा मैं इतना धक्के खाया यहाँ 3 साल काम ढूंढने के चक्कर में कि मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जब मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं बहुत काम करूँगा और इसका ट्रैक रखूँगा. That's why I have a track of my thing. नहीं, I think मैं fortunately ये इतनी ज़बरदस्त फील्ड है एक्टिंग, that इसमें कितने भी कैरेक्टर यहाँ पर इस समय बैठे हुए कुछ 50 लोग, ये 50 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. तो ये सब मटेरियल है मेरे लिए. और I don't take myself so seriously. If the problem is that when you take yourself seriously, you stop growing. And this is a field where you, if you want to, you can keep on growing. And then you want to work with, I'm working with him for the first time, then I imbibe so many things from him, I learn so many things from him, I learn every time when I read a character. So बहुत कमाल का ये प्रोफेशन है जहाँ पर सीख जो है ताउम्र रह सकती है. और आप 85 साल की उम्र में, you see Clint Eastwood, you see so many people who are doing some amazing work even at the age of 90. तो मुझे लगता है अरे अभी तो 30 साल बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ काम करना है. आपने you wowed everybody with your fitness levels. जी. तो अब कई बार आपको लगता है कि अरे मुझे से एक्शन कराओ, मैं क्यों बहुत लगता है. और खासकर जब मैं इनके साथ बैठा होता हूँ तो मुझे बहुत लगता है. Because आपने मेरे से ऐसा सवाल पूछा है जो आपकी दुखती रग है. मतलब इनकी दुखती रग होनी चाहिए, मगर ये मेरी दुखती रग है. Because if there is anybody who, because अब मेरा वाकई दिल करता है. कल मैंने एक गदर देखी तो मुझे लगा कि क्या कमाल का, मतलब at this age, जो एज की बात करते हैं ना, तो हमेशा लगता है मुझे. Because I think human possibilities is so amazing. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अगली बार आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे और अगर नीरज पांडे साहब मेरे साथ कुर्सी बैठे होंगे तो आप कहेंगे अरे पिछले साल मैंने पूछा था और इस साल ये हो गया. कैसे तो आप बोलोगे कुछ भी हो सकता है. क्या बात है. मैनिफेस्टेशन ऑफ अनदर लेवल. नहीं, सच बात है ना. देखो 15 साल पहले इन्होंने सोचा होगा कि कभी ये, इन्होंने जब वेडनेसडे देखी होगी, स्पेशल 26 देखी होगी, बेबी देखी होगी, टोनी देखी होगी, थोड़ा सोचा होगा उन्होंने कि एक दिन ये बैठे होंगे. नॉट दैट आई एम थिंकिंग दैट ही इज नॉट केपेबल, बट ड्रीम्स को आपने रियलिटी बनाना है तो उसको मैनिफेस्ट करना ही करना है और उसके लिए मेहनत करनी है.
तो अब आपने बॉडी और फिटनेस की बात की है तो होगा, एक दिन जल्दी होगा। ये मेरे मेंटोर होंगे उसमें, उसमें मेरे मेंटोर ही होंगे। मुझे वही लग रहा है। तो आपको प्रेशर फील हो रहा है अब बहुत जोर से। बट यू नो कमिंग बैक टू यू नीरज, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि you know तारीफें होती हैं, which is great, it's a good place, enviable position to be in, but then also as an artist आप पे ये दबाव कि आप खुद को reinvent करें हर बार, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो लोग बोले हाँ नहीं देखा हुआ, how do you keep that balance? Very simple. As long as you know that you don't know everything, and there's scope for learning, and you're learning every day. It could be in any field. It could be through anyone. I mean, it could be through your assistants for all that you care. If you're open to learning, you'll find that yes, I mean, you are not where you should be happy or complacent about, right? So, if you keep that open in mind and you would want to grow as a person, it's very easy. Mohit, this has been your first experience working with the two of them. What has been your big learning? What is the one takeaway that you have? Oh, there's not one. There are many. After reaching where they have reached, they don't take things for granted. They give space and they listen to all the ideas and the feedback, whatever is coming their way, what the other person has to say. So I think having those qualities and having such huge amount of work under their kitty, they still listen to you. I think these things really speak volumes about the kind of people they are. Freelancer की अगर हम बात करें, the sort of prep that went into this, आप of course show पे भी इनके mentor हैं, and you, like you said, the whole journey from zero to hero, like you described. So what was the actual prep that went into your roles? Well, for me, there was a lot of prep, because, I was just telling it to someone in the morning. They said, because whenever you go out, people ask you, what is the next project that you're doing? So, for example, you say, I'm working with ABC, Mr. A. They're like, okay. But when you say that, I'm genuinely saying, when you say, मैं नीरज पांडे सर के साथ कुछ कर, नीरज पांडे सर के साथ कुछ, अरे यार क्या बात है, so automatically the pressure comes into your head. I'm being very modest about it because they say that you got this opportunity to work with him, you have to kind of pull up your socks, you don't need to do best. So you need to put your best foot forward. तो अगर आपको मेहनत करनी भी नहीं है ना, you want to go that extra mile and understand that what he wants you to do. So obviously I had seen all his movies, but obviously adapting this book and making it into a series was a different thing altogether. I sat with him. I understood what he's wanting to make. उन्होंने मुझे बताया, explain किया that what is the characteristics that he wants me to achieve. We had readings with my wife also, which is being played by Manjari Furness, to understand the personal perspective. Professionally, we did readings with Anupam sir as well, जिनसे I got to know that how I should be perceiving and taking that direction. Physically, he wanted me to do a lot more because it's physically draining, and he wanted me to be agile and flexible because there's a lot of physical activity and action involved in this. So I think a lot went behind the scenes to understand and be close to Avinash Kamath as much as I could. And if I may ask, how did you bag this role? Was there a special audition that you had? Oh, well, I think I met sir long back for something, and uske baad, unfortunately, I was not able to be a part of that. Uske baad, so there was a long gap in between. So uske baad मैंने बीच में 2-3 series की थी. So I used to keep sending sir the trailers on the phone because genuinely I had this thing in my head. I said, यार ये तो कितने actors से मिलते होंगे. He'll forget about me. So मैं उनको भेजता रहता था. So I have done all that happy but Diwali. But not curtsy that, by the way. Let me clarify. नहीं, because I was like, because you keep meeting a lot of people. Sure. So how will you remember कि अच्छा मैं आज से 1.5 साल पहले मोहित से मिला था. So let me call him again. जैसे कि सर ने बताया कि फ्लाइट उतरने से पहले सर wanted to kind of send you a text. So we actors go that thing in our mind. So I said यार सर को ना थोड़ा so that he remembers 2-3 महीने बाद कि अच्छा ये मोहित है, मैं उससे मिला था.
So then sir's team got in touch with me. They said ki sir is making something on and he wants to meet you. Then I met sir and then he told me that he's adapting this book. But to just interject and put in a word on Set that. the record yeah. straight. So Mohit was the first choice for this even long before we started writing this project. It was just possibly on the day that we decided that okay, Friday and Hotstar we got together and we said that let's do this. And the first person that we spoke to was Mohit, because I'd seen his work. We wanted him to be a part of something that didn't quite work out, and he was always there on my mind for doing something like this. So yeah. Great. So you don't have to worry. Yeah. But I think a lot of actors do go through this insecurity. भूल जाएंगे हम, you know, हर जगह other होता है, side. वर्ल्ड Yeah, में हर जगह yeah, होता है. yeah. बिकॉज आई थिंक एक एक्टर की जिंदगी डिपेंड करती है कि उसने कितना अच्छा काम किया है, और अच्छे डायरेक्टर गिने चुने होते हैं और वो विश लिस्ट में होते हैं. और क्योंकि जब हम किसी और का अच्छा काम देखते हैं तो तारीफ भी होती है और मन में जलन भी होती है कि यार ये मैंने क्यों नहीं किया, या इसने कैसे कर लिया, इसको कैसे मिल गया. It's a grudging admiration. As for to answer your question, as far as my look, I think I was very pleasantly surprised and happy with the look that they made for my Dr. Khan's character. वो मैंने बहुत सारी लुक्स की हुई हैं फिल्मों में, तो उसके बावजूद कोई एक नया रूप देखने को मिले तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड, एंड his constant instructions to me, apart from other directorial instincts, was to sit straight. ये मुझे बोलते सीधा बैठिए for this particular. Because you're the mentor and you. नहीं, but I think it looked good. Yeah. And आज भी मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो कोशिश करता हूँ थोड़ी देर में सीधा सीधा ही बैठ जाऊँ. तो साइकोलॉजिकली मुझे याद आया नहीं. I think it's Lovely. You know, I'm going to end with a question to you, Anupam ji, क्योंकि आपने बोला कि कैसे the hunger to want to keep performing and outperforming your own self is always there. A lot of actors say कि वो अपना काम नहीं देख सकते. You know, उनसे नहीं देखा जाता है. आप देखते हैं, and how critical or critic are you of your myself? Because I look at my journey rather than my performances. I look at my journey from Shimla to Chandigarh to Delhi to Lucknow to Mumbai, and I'm one of those fortunate people, 0.001%, who have made it, God has been kind. तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बुरा काम भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि किया तो है ना, काम तो काम ही है. But are you critical? आप बहुत tough to please yourself. मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता. एक्टिंग के बारे में तो क्रिटिकल है. कभी-कभी मैं इसलिए आसपास तारीफ वाले भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि आसपास वाले बर्बाद कर सकते हैं. 2-4 रेफरेंसेस पॉइंट्स होते हैं. आई एम क्रिटिकल. आई समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है मैंने अच्छा किया है, लोगों को पसंद नहीं आया, फिर लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे पसंद नहीं आया. But it's okay. That's a journey that one keeps taking, and as long as you're working, I think you are always sharpening your rough edges. काम बहुत जरूरी. मैं चूज ही नहीं होता हूँ कि अब मैं बैठ के सोचता हूँ जब मेरे पास कोई अच्छा काम आएगा. मैं काम करता रहता हूँ. Lovely. So ये यादगार रहेगा एपिसोड, बिकॉज आप पे प्रेशर पड़ा था. अब लेट्स सी ये मैनिफेस्ट. ये आप बात अच्छा कर रही हैं, बार-बार जो इनको याद दिला रही हैं. मतलब and she's also not letting go. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप ये इसका क्लिप मुझे भेज देना. मैं इनके ऑफिस इनकी तरह जो है मैसेज भेजता रहूंगा व्हाट्सएप इनको. इसी एपिसोड के क्लिप्स. But thank you so much. This was a lot of fun. और बताओ क्या हाल है.